ये है पार्ट 3 ऑफ हाउ टू क्रैक द आइल्स एग्जाम एंड इन दिस पार्ट हम लोग स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं स्पीकिंग सेक्शन पे. सो द स्पीकिंग सेक्शन हैज़ 3 पार्ट्स. जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू विच गोज ऑन फॉर अबाउट 4 to 5 minutes. इसमें इंटरव्यूअर खुद को इंट्रोड्यूस करेगा एंड दे ऑल्सो आस्क यू फॉर योर इंट्रोडक्शन. सो दे आस्क यू अबाउट जनरल थिंग्स लाइक स्टडीज, आपका वर्क एंड स्टफ लाइक दैट. सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दैट फ्लुएंटली. नेक्स्ट पार्ट इज द इंडिविजुअल लॉन्ग टर्न जो कि 3 to 4 minutes का होता है. इसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा एंड इस टॉपिक के बारे में आपको एटलीस्ट 2 minutes के लिए कुछ बात करनी होगी. इस पार्ट के बिगिनिंग में आपको एग्जामिनर एक पेपर एंड पेन या पेंसिल भी देगा एंड आपको 1 minute मिलेगा टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक एंड टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू वांट टू डिस्कस. एंड उस 1 minute के बाद देन यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक. Now when you're going through this part, it's very important to speak clearly and fluently. Don't worry too much about having a very wide vocabulary. What's more important is कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, clearly बोल रहे हो and fluently बोल रहे हो. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी टू मच, जस्ट मेक समथिंग अप. I would also suggest कि don't take very long pauses as you speak. This shows low confidence and कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. जो लास्ट पार्ट है स्पीकिंग सेक्शन का, दैट इज़ अ 2-way डिस्कशन. इसमें द एग्जामिनर विल आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक दैट यू डिस्कस्ड इन पार्ट 2. तो ये एक बहुत अच्छा मौका है टू एलैबोरेट योर आंसर अ लिटिल बिट बेटर. द गुड थिंग इज कि वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट मेकिंग थिंग्स अप इन दिस सेक्शन बिकॉज वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आप अपने आंसर को अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हो based on the question that they ask. Again, the most important thing is to practice beforehand. The more you practice with people around you, the more confident you'll be when you're giving the actual exam. So it's very, very important to practice beforehand. This was the third part, so there's a fourth and last part जो कि है writing section के ऊपर. If you want tips on that, check out that video on our account.